हेलो गाइस। प्रज्ञानंदा अभी बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है और 2026 उनके लिए एक ड्रीम ईयर बन रहा है। उन्होंने अभी नॉर्वे चेस 2026 जीता, जहां प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को बैक टू क्लासिकल गेम में हराया और टूर्नामेंट भी अपने नाम किया। और अभी वो पहुंच गए हैं हांगकांग फीडे वर्ल्ड टीम रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में कम्पीट करने, जहां वो अपनी टीम चेस गुरुकुल को लीड कर रहे हैं एक टैलेंटेड यंग स्क्वाड के साथ। और उसी टूर्नामेंट से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एब्सोल्यूट स्टनिंग गेम, प्रग वर्सेस अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हैंस नीमन। यार इस गेम में जो हुआ वो देख के आप भी बोलोगे प्रग इज अ जीनियस। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी चेस कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर लो चेस विद निखिल। चलिए गेम पे चलते हैं। तो प्रग यहाँ वाइट पीस के साथ है। उन्होंने स्टार्ट किया E4, pawn to E5, knight to F3, knight to C6, and now bishop to C4. Okay, so Italian game standard moves: knight to F6, pawn to D3, and now bishop to C5. Pawn to A3, and hence castle here. Knight to C3, pawn to A6, and now bishop to E3. Hence capture this bishop, pawn takes bishop, and now pawn to D6. Pragg castle here, and now bishop to E6. Pragg captures this bishop, pawn takes bishop, and now pawn to D4. King to E8, pawn to D5, attacking this knight. Knight back to D8, and now queen to E2. यहाँ पे प्रग का आइडिया है कैप्चर दिस पॉन एंड पुट दिस क्वीन टू C4 एंड चेक। ठीक है, सो हैंस चला knight to F7 and now queen to C4. Hence capture D5 pawn, knight takes D5, captures, and now queen to B5. Okay, hence offered the queen trade, knight to D2, and now pawn to C6. Pragg captures queen, A pawn takes queen, and now knight to E4. Rook to A4, attacking this knight, knight to C3, and now rook to C4. Rook to F2, knight to G5, and now knight to D2. And यहाँ पे हंस ने rook sacrifice किया and capture this knight. Pawn takes rook, and now knight to E4, attacking this pawn as well as the rook. Rook to D8, and यहाँ पे हंस ने कैप्चर किया pawn to C3. तो यहाँ पे प्रग ने देखा अगर मैं ये रुक सेक्रीफाइस करता हूँ तो आई कैन विन द पॉन। प्रग ने चला pawn takes C6, and now hence capture this rook. Rook takes knight, pawn takes C6 pawn. प्रग ने कैप्चर किया this D6 pawn. Hence ने चला rook to C8, and now king to F2, king to F7. प्रग ने यहाँ दिया check, king to F6, and now king to F3. Pawn to C5, and now king to E4. Pawn to B4. Okay, so this is not a best move. यहाँ पे बेस्ट मूव होता, यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट मूव है rook to A8, attacking this pawn. Suppose Pragg decide to give check, king back to F7, and now rook to D5, attacking the both pawn. यहाँ पे ब्लैक चल सकता है rook to A4 check, king takes E5, now rook takes A3. Rook takes E5, now hence can capture E3 pawn, and now king to F4, and now rook to E2, attacking this both pawn. So यहाँ से गेम ड्रॉ हो सकता है, बट हैंस ने चला pawn to B4. ओके, यहाँ से व्हाइट कैन इजीली विन दिस pawn. सो प्रग ने चला rook to D6, king to E7. Now Pragg capture this E5 pawn. Pawn takes A3, and now rook to A6, attacking this pawn, and Pragg can easily win this pawn in the next move. Rook to F8, Pragg captures this A3 pawn, and now rook to F2, attacking this G2 and C2 pawn. Pragg ने यहाँ पे दिया check, rook to A7, and now king to F8. Pawn to G4, and now pawn to H5. Okay, so this H5 is also not a good move. यहाँ पे ब्लैक को कैप्चर करना चाहिए था H2 pawn and attack the C2 pawn. Pragg has to save the C2 pawn, तो उन्हें चलना पड़ेगा C4. यहाँ पे ब्लैक चल सकते हैं G2, attack on this pawn. Okay, but hence ने चला pawn to H5, now pawn to G5, and now hence capture this H2 pawn. King to E6. Okay, so threatens to checkmate in the next move. Pawn to G6, and now king to F6. Again, in the next move, checkmate. King to E8, and now Pragg captures the G6 pawn. Pawn to H4, king to S7, pawn to H3, pawn to G6. Now Hans has only one move to save this game, is rook to G2, attack on this pawn. Pragg ने चला pawn to G7, and now pawn to H2. And यहाँ पे Pragg ने चला rook to A1,
not allowing Hans to take the queen. And in this position, Hans Niemann resigned the game because यहाँ से you cannot save the game. अगर black ने चला king to f7, then simply Pragg can make the queen in the next move g8. If black decide to capture this queen, and now rook to f1 check, king to e8, and now Pragg can capture this rook and easily win this game. Okay, so on this position, Hans Niemann resigned the game. Pragg won this wonderful game. If you like this game, please subscribe my channel and hit the like button, and I will see you in the next game. Thank you.